Hello, friends. My name is Vijay Jodha. I'm an expert in photography, selector, and trainer for NAAI, National Abilympics Association of India. I've also served as international expert at the International Abilympics in France. तो मैं जो नाई हमारी संस्था है एबिलम्पिक्स में काम करती है अलग अलग स्किल्स के सब नेशनल्स रीजनल्स और इंटरनेशनल के लिए भी यंगस्टर्स को तैयार करती है। आज हम लोग बात करेंगे इसी तरह एक जो स्किल है आपकी पेंटिंग एंड डेकोरेटिंग, उसके अभी हाल ही में हमारे रीजनल राउंड्स हुए थे और उसके बारे में हमारे पास में एक्सपर्ट्स भी हैं और कैंडिडेट्स भी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया था। Good afternoon, everyone. I am Hakim Mamka. I have an experience of the paint industry. Basically, this paint is the paints used for automobiles, masonry, and all that. Okay, not the canvas painting type. I was with Asian Paints for 25 years. Then I went abroad for a 6 year stint at Nigeria. I was back and I have been part of the Paints and Coatings Skill Council since its inception in 2015. In the Skill Council, I have represented India for the World Skills competition. In painting and decorating, basically the skill is that it is taken as an example. You take that there is a customer who wants a house to be painted, and he will give instructions on what needs to be done. So painting and decorating also goes on that line. There is a project that is given, test project, which will tell the contestant what they are supposed to do and how it will be evaluated. Evaluation is very rigorous and it is done by actually measurements mainly. There's very little scope for any judgmental ratings or marks to be given. Most of it are measurements. It also includes wallpaper because that is nowadays becoming very common. The wallpaper on one wall. So in that also the test project gives you that the wallpaper apply from a certain point, then check for overlap, check for the gaps, check whether the design is matching or it is not matching. So all this is being done. This is what is there basically painting and decorating. Also, what is provided is that the infrastructure for this, all the paints that are required, the wallpaper required, except the brushes and rollers are not provided. That a candidate has to carry his own. So actually, we have a toolbox. Okay, we prepare a toolbox wherein we have the spirit level also. Check whether it's straight. They don't measure at every point and to check that it is right. They just measure at the top of the uh, wall where they put the wallpaper or whether there is covered with anything else. They measure that and then just take that spirit level and see that it is straight. So that is how the evaluation takes place. So there's somebody who's actually helping the candidate in case they need to take measurements and all of those things. How does that work? No, in fact, once the competition starts, you are not supposed to have any discussions with anyone. If there is any issue that the candidate has, he will ask the expert from other country and tell them. Then they will call and there will be a, then I can join only in their presence. And then there will be a discussion, whatever is the issue. Competitors are not allowed to talk to each other during the process. No mobile phones are allowed. No laptop is allowed. Once you get it inside. Wonderful. Sir, now let us try to speak to the candidates themselves. First, we'll speak to Yash Ganesh, who is a gold medalist from the West Zone, Mumbai, where we had her last just about a week back. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यश। मेरे पापा जी का नाम है गणेश। मैं पुणे का रहने वाला हूँ। मैं अभी 10th क्लास में हूँ। मेरे अंदर बचपन से ही था, मैं बहुत पसंद करता हूँ पेंटिंग, ये सब सारी चीज़ें, तो इसलिए मैं इसमें आया हूँ। मैंने सार्थक में रजिस्ट्रेशन लिया था, तो मुझे सार्थक वालों ने ही उन्होंने सपोर्ट किया है और मैं यहाँ तक पहुँच पाया। मुझे एक ही फील्ड में जाना था, पेंटिंग में, इसलिए क्योंकि मुझे बचपन से वही चीज़ पसंद थी, इसलिए मैं इसी में पार्टिसिपेट किया। ओके। और इनका नाई कंपटीशन जो मुंबई में वेस्ट जोन में जो आए थे अभी, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, जरा बताएं। उनका सबसे अच्छा एक्साइटिंग या नर्वस मोमेंट कौन सा था, उसके बारे में थोड़ा शेयर करें हमारे लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने पार्टिसिपेट किया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे उन्होंने दिया मेडल, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मेरे परिवार वालों को भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वेरी गुड। श्वेता जी से बात करते हैं, जो हमारे दूसरे गोल्ड मेडलिस्ट है ना, साउथ जोन से जो है गोल्ड मेडलिस्ट। कि मेरा नाम श्वेता है और मैं बचपन से ही, मुझे पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। मुझे मेरे जो टीचर्स थे वो भी मुझे बताते रहते थे पेंटिंग्स के बारे में। फिर मेरी पढ़ाई भी साइड बाय साइड चल रही थी और पेंटिंग का भी मुझे शौक था, तो मैं वो भी करती रही थी, तो इसलिए मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया। और अभी भी मैं सीख रही हूँ। अभी भी मैं जो पेंटिंग्स है, वो जो बुक्स हैं, बुक मार्क करके जो है, वो मैं सेल भी करती हूँ।
जो साउथ जोन कॉम्पिटिशन नाई के जिसमें ये गए थे, उसका एक्सपीरियंस इनका कैसा रहा, उसके बारे में थोड़ा शेयर करें। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं फर्स्ट टाइम मैंने ये ज्वाइन किया था, मैं इतनी एक्साइटेड थी। आप लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया। मैं सोच रही थी कि नॉर्मल से चीज़ होगी कुछ, बट नॉर्मल नहीं था, बहुत सब कुछ बहुत बढ़िया था। और आपने मुझे बताया रूल्स, लाइक उसमें क्या कैसे हमको सक्सेस प्राप्त करनी है, सारी चीज़ें। तो मैंने स्किल्स डेवलप की, तो यहीं पे मैंने डेवलप की। तो थैंक यू सो मच। मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब मुझे मेडल मिल रहा था, और मैं आगे भी प्रयास करती रहूंगी। मैं और मुझे और कॉन्फिडेंट मैं फील करने लगी हूँ, तो मैं ऐसे ही आगे और बढ़ना चाहती हूँ। थैंक यू सार्थक टीम। First of all, when you as an expert, when you're looking at the candidates, how you are figuring out who should be the winner, what is your criteria? Only there are about, I think, two criteria where we do a judgment. One is looking at the overall, how good it looks or how bad it is, overall impression. And the other one is whether it is complete or not, what has been done. Because if it is an incomplete painting, normally no marks are given. What practical tips would you give to other participants, the future participants in this particular category? See, what you have to do is you should be very clear about the measurements, because that is one area. It's very simple, and your understanding of the project. You lose a lot of marks because of if the measurement is not as per what is required. The second thing is that the paint application. See, you're not supposed to use any guide or any ruler to make draw straight lines. It's all freehand. So that is what you should practice. That you are able to get a straight line. Very good. Thank you so much, sir. Lovely chatting Some- up with you. And thank you again to both our candidates, Yash and Swetha. All of you who are watching this particular program, this podcast, you can go to the NAAI and Sarthak website. We have a lot of information how to participate, details on our upcoming competitions also, as well as all our old episodes. You can see and learn from that. So do stay in touch, spread the word to other people who may be interested in this. Thank you so much for joining. Thank you. Thank you.